Hello, good evening, everyone. Yes, so welcome to BYJU'S exam prep, and today we are going to discuss about the previous year questions of the electrostatic and magnetostatic from the year 2017 to 2023, and there may be a few questions before the 2017 also, because the purpose of this schedule session is to cover the most of the questions from the electrostatic and magnetostatic for the EEC. So guys, quickly share the session with all of your friends. This session is going to be important because this session is actually about the electrostatic and magnetostatic, which is common for all the students, whether you are from EE or you are from electrical. This session you can attend, and you will understand that which kind of questions are coming in this particular chapter in the ESE. ठीक है, तो before starting the session, let me introduce myself. So this is Saket Verma, and I have done MTech from IIT Guwahati, and I'm having more than 13-year experience. And my area of expertise are electromagnetic theory, communication system, advanced communication system, signals and system, and ICT. So these are the subjects where I generally teach, and this is my Telegram group, which is Baiju underscore gate underscore Saket sir. Or you can also join the group where electronic by Saket sir, you can search in the Telegram group, and you will see the PDF of the different sessions that I have already taken. You will see the questions related to that, and for notification of the class, everything you will receive in that group. And UPSC ESE 2023 results are out, so you can share your result with us to attend the mock interview free of cost, and the link is given in the description. So guys, this is the first question, and this is related to what? This is ESE 2015. As I told you, that there will be some question where you will find it before the 2015 also, 17 also in fact. So guys, quickly solve this question. I'm giving you 2 minutes to solve this problem. Well, it is not going to take more than 1 minute, but still, I'm giving you the options to correct. अगर आपका कोई mistake होता है, you can comment in the comment section. The maximum space rate of change of the function, which is in increasing direction of the function, is known as the maximum space rate of change of the function, which is in the increasing direction of the function, is known as इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो आपको शो करेगा उसका कौन ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन को शो करेगा. Yes, so you have 2 seconds left, and now it's completely over. So the time is over now. Which answer is correct? So, guys, first of all, let's try to understand what is the curl and the divergence and the uh, Stokes theorem, etc. Okay. So, when we calculate the gradient of any function, right? When we calculate the gradient of any function, then we basically calculate the maximum rate of change. Okay, maximum rate of change per unit distance.
maximum rate of change in any function per unit distance. And then you have the divergence. Okay, now the divergence is nothing but a measure of how much a field, whether it is electric field or magnetic field, how much a field diverges about any point. Diverges about any point. And then we have the curve, and it is nothing but the measure of how much a field curl about any point. So in this way, you can understand what is should be the correct answer for this. So the correct answer for this would be the gradient of a scalar function. The gradient of the scalar function will give you the maximum space rate of change per unit distance in the increasing direction. Okay. Now try to answer this one. A phasor may be a scalar or a vector. A phasor is a time dependent quantity and is a complex quantity. Which one should be the right answer for this question? A phasor may be a scalar or a vector quantity. It is a time dependent quantity and it is a complex quantity. Which one of the following or the above statements are correct that you have to tell? Okay. Let's see whether it is a basic question from the vector calculus. It is not a question of electrostatic or magnetostatic. So this obviously can be solved by you. In the vision gate course, we all teach this type of concepts in the either in the mathematics or in the electromagnetic theory in the vector calculus part. I generally teach this part that how do you represent the phasor, how do you draw the scalar or a vector quantity. So, as I told you that this is a basic question, and the phasor is always a time dependent quantity and it is a complex quantity. Okay, so these two statements are correct. So the right answer will be option D. This is a theoretical question directly. Now answer this one. The field strength at a point of finite distance from an infinite long straight uniformly charged conductor is obtained by the radial component and the longitudinal component of the force acting on the point charge by the charges on the electrical length of the conductor. The resultant field strength is. The field strength at a point of finite distance from an infinite long straight uniformly conductor is
obtained by considering the radial component and the longitudinal component of the force acting on a per unit charge. Force per unit charge is nothing but the field strength by the charges on the elemental length of the conductor. The resultant strength will be. Come on, answer this question. Okay, let's see the answer of this question. See, it is given that there is a infinite long line charge. ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है infinite long line charge, and because of this, you want to calculate an electric field at any point. So it is the perpendicular distance, say r or rho, you can also write. And suppose this is the lower end, and at this point, like this, there is electric field, and because of this also there is electric field. Okay, let us say that the electric field here is the total electric field. It will have the two components. One is in the direction of longitudinal, and one is another is the in the perpendicular, that is DEP, perpendicular or resultant, you can say. Similarly, it has also two components, so DEL. So this DEL will cancel each other. Okay, this DEL will cancel each other. So overall DE is nothing but the sum of the DEL and so on. So DEL is the longitudinal component and DER is the radial component. So the longitudinal components should have the sum 0 and all the radial components will add together. So here you can see that the sum of the R component, that is the radial components, you will get when the sum of the L component is 0. So the total electric field strength will be the sum of R components and the sum of the longitudinal component will be 0, because like for this particular point charge, if you will calculate here and here, then it will be like this and this one. So when you will take the two component, one component will go in the positive L direction longitudinal and second one is in the radial direction, and similarly for this two. So these two will again cancel each other and the resultant will go in the direction of radius. So the answer would be the first one. Okay, the R component, that is the radial component, will add together, and on the other hand, all the longitudinal components will be cancelling each other. Okay, now answer this one. This is another good question. A parallel plate air capacitor is shown below, has a total charge
Q and the breakdown voltage is V. A slab of dielectric constant 6 is inserted as shown below. The maximum breakdown voltage and the charge at this voltage would be total charge of Q. Last 2 seconds. Think of it, guys. L by 2 is given. Okay. Let's answer this question. See, first of all, it is given that the capacitance of any airfield is or parallel plate capacitor is epsilon A upon W. Okay, the W is the width and A is the area, cross section area. And you also know that the charge is equal to C into V. So you can say the equivalent charge or total charge is the equivalent capacitance and the voltage, because the voltage remains same in this case. It is a parallel condition case. Okay, so the equivalent capacitance will be the epsilon naught A upon 2D, because the area become half, and 6 epsilon naught A upon 2D. Okay, because one in the half direction distance you are feeling the dielectric. So now you will get 3.5 C. Okay, that is C epsilon naught A upon D, or epsilon naught A upon D you can write. Epsilon naught A upon D you can write this as 1 by 2 and this is 3. So 3 by 2 and 1 by 2. You can say for airfield, this is for airfield in the beginning before the dielectric field. For airfield, the capacitor is the epsilon naught A upon D. Okay. Now from here the equivalent capacitance is 3.5 C into V, and this is the charge. Okay, so the overall charge is 3.5 into Q. So the charge becomes 3.5 times. The charge becomes 3.5 times. So that is the answer, or this may be the answer. But as it is a parallel connection, so the voltage remains same. So the answer should be option A, because it is a parallel combination of the two capacitance, right? So the option will be option A. Voltage will remain same and the capacitance only you have to calculate. Now answer this one. The capacitance of a conducting sphere of radius r with the total charge of q uniformly distributed on its surfaces. The capacitance of a conducting sphere of radius r with a total charge of q uniformly distributed on its surface. The capacitance of a conducting sphere of radius r, the total charge of q is uniformly distributed on its surface. Come on, tell me, what should be the answer?
See, we know that the potential, okay, suppose I want to calculate the potential, then potential is given by kq by r, right? In this way, the potential in the surface of the sphere is also given by the same, okay, kq by r, the charge is distributed on the surface. So, we want to calculate the capacitance. So we know that Q is equal to CV. So it is C is equal to Q upon V, and we will have the direct relation from here. Okay, let me write again. Q equal to CV. We want to write C. So Q upon V. The potential, I told you that it is, if it is a sphere, okay, and the here the potentials are like this. The charges are in the on the conductor, the charge is here. So we say that the electric field is zero, okay, and the voltage is constant, and that is nothing but the 1 upon 4 pi epsilon naught. That how do you calculate this? This is 4 pi epsilon naught and 1 upon A minus 1 upon B. So the B is outside the outer conductor, which is at infinity, and then you will get as the isolating sphere. So C is equal to 4 pi epsilon naught A. So here we want to write 4 pi epsilon naught R. So here the capacitance is directly proportional to R. So here you can see that it is independent of the charge. Okay, independent of R? No, it is dependent on it is proportional to QR. No, it is not proportional to Q by R. It is independent of the charge Q. It is independent of the charge Q. Answer is D. Now, answer this one. Consider the following type of transmission line: open wire transmission line, twin lead wire, coaxial cable. The capacitance per meter will be at least in which of the above transmission line? Will be least actually, not at least. It will be least. The capacitance will be least in which one of the above transmission line? Yes, last 40 seconds. Open wire transmission line, twin lead wire and the coaxial cable. Which one will have the least capacitance? Which one will have the least capacitance? Yes, so correct answer is sorry. Open wire, not twin lead. Open wire transmission line is having the least capacitance. This is a direct theoretical question. Now, next question. The dielectric strength of the rubber is 40,000 volt per meter at a frequency of 50 hertz. What is the thickness of the insulation required on an electrical conductor at 33 kilovolt to sustain the breakdown? What should be the thickness required to have this particular to sustain this particular breakdown for the breakdown from the breakdown? ठीक है, आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो. ब्रेकडाउन से आपको बचा
सस्टेन होना चाहिए 33 किलो वोल्ट देने पर भी वो सस्टेन करना चाहिए कंडक्टर। क्या है? The dielectric strength of rubber is given. Come on, answer this question. Last 10 seconds. Yes, so the answer is simply you can calculate it by the formula, that is the electric breakdown. That means the breakdown voltage is given. So breakdown voltage is nothing but the E into D. So thickness we want to calculate. So voltage upon electric field. Voltage is 33,000 and electric field is 40,000. So this will get cancelled and you will get 3.3 upon 4. So it is approximately 0.8. 0.8 and it is in the millimeter 0.83 millimeter. Okay. Answer is option A. Next. Voltage is energy per unit charge created by the charge separation and power is energy per unit time. So is these two statements are correct? This type of question you can solve. Now answer this one. Can you guys answer this? Can you guys answer this question at least? This is the easiest question we have in the last of 7 to 8 questions. This is the easiest question we one can have.
Last 10 seconds. Gauss law, you can tell easily, guys. Yes, so Shanu Kumar has come up with the answer. Now, this is the first question that you have answered. Yes, the Gauss law states that the total charge passing through the closed surface is equal to total charge enclosed by that closed surface, right? So, if you write the Gauss law, it is the total flux. How do you write the total flux passing through any surface? This is this d integration. D dot ds is the flux passing through any surface. We are talking about the flux passing through the closed surface. So this is integration over the closed surface is equal to the charge enclosed, and this is also calculated as integration over the volume rho v dv. So this is the one form of the Gauss law in the integration, that is the Gauss theorem leads to the Maxwell one equation, and also you can write that the divergence of D is equal to rho v. Okay, the divergence of D is equal to rho v. So this is the second form. Now answer this one. Okay, so the electrical flux enclosed by a surface surrounding by a charge equal to the amount of charge enclosed is statement of Gauss law, because just now we have seen in the last question. Yes, answer this one. If a positively charged body is placed inside the spherical hollow conductor, what will be the polarity of the charge inside and outside the hollow conductor? We are keeping the positive charge body inside the hollow conductor. Okay. So suppose this is your hollow conductor, this is your hollow conductor, and you are putting a positive charge over here. Now give the answer. You are giving the positive charge over here. Force in the charge Q due to the electric field is F is equal to QE, and for the positive charge the force is in the direction of electric field, and positively charged body placed inside the hollow spherical surface, you can keep the charge Q placed inside the sphere due to the sum of the electric field is generated, which is away from the center. Okay, this is the charge body that we are putting, positively charged body. So if you are putting the positive charge body, then here it is negative in the inner surface of the conductor, and because of the induction, this is the positively charged and the outer conductor. So inside negative, outside positive. Correct? Yes. Yes, Shanu, correct. Absolutely correct. Now answer this one.
Come on, quickly answer this question also. Which of the following equation represent the Gauss law adapted to a homogeneous isotropic medium? Yes, here actually there is a misprint in this particular question, that it should be not be the integration over the closed volume, and according to that, then one and this 4 will be the right one. If you consider this as a integration only, then not the closed surface. Obviously, it is not the closed surface. So answer is option A. Now answer this one. The maximum potential gradient that can be imposed in air at atmospheric pressure without breakdown is. Last 20 seconds. We energy density. How do you define the energy density, guys? जल्दी से बताओ सोच के कि how do you define the energy density? Okay, so energy density we define as energy per unit volume, as you can see in the unit also in the options, and it is nothing but the half epsilon E square. ओके सो 1/2 एप्सिलॉन इज आप दिया हुआ है यहाँ पे एयर, सो 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसको आप लिख सकते हो 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻², इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे आपको लगभग मिल जाएगा 40 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? इसको अप्रोक्सीमेटली आप ले लो 9 और उसके हिसाब से सॉल्व करके देख लो, लगभग लगभग आ जाएगा आपका 40। देखो गाइस, अगर अभी तक आपने बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें हम लोग लेके आते हैं आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट फ्री सेशंस जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो प्रेजेंट में एग्जाम चल रहे हैं उसके अराउंड हम लोग सेशंस लेके आते हैं, जैसे एचएएल हो गया, जैसे कि आपका इसरो हो गया, इन सब के अराउंड आपके वहां पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। देन आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि लीडर बोर्ड क्या हो रहा है ना, लीडर बोर्ड में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपको किस तरीके से वैल्यूज देखने को आपका पोजीशन देखने को मिलेगा लीडर बोर्ड के थ्रू, कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं अमंग द अदर कॉम्पिटिटर्स, यानी आपके जितने फ्रेंड्स हैं
उनके कंपैरिजन में आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया लास्ट वीक के टेस्ट में और इन्होंने क्या नंबर लाया है, 1700, 1620। ये सारे मार्क्स आपको ओवरऑल स्कोर देखने को मिल रहे हैं और देख सकते हो कि टोटल 60 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दिस वे आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। सो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब आप ऐप में आओगे तो भी आपके पास ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया ले सकते हैं। Yes. So as you can see that a hollow metallic sphere of radius r is charged of a surface surface charge density आपको दिया हुआ है, the electric field strength inside the sphere। तो आपका अगर मेटालिक सरफेस है, इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो। चलो इसको सॉल्व करो। चलो आंसर कर दो। Yes, last 1 minute. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 10 picofarad if the distance between the parallel plate is half and the space between the plate is filled with a material of dielectric constant 5, then the newly formed capacitor is। देखो इसमें आपका इस टाइप का सिचुएशन, पहले जो कैपेसिटेंस था वो सी नॉट मान लेते हैं, ये 10 पिकोफैरड था। अब आपने क्या किया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज हाफ, तो मतलब इसको हम लोगों ने पैरेलल प्लेट के डिस्टेंस को हाफ कर दिया। ठीक है, और उसको फिल कर दिया किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से। ठीक है, और बाकी को आपने एयर रहने दिया है। तो इसको दो अलग अलग पार्ट मान लो आप। एप्सिलॉन आर टू की वैल्यू हो गई 1, एप्सिलॉन आर1 की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे आप लिख लो सी नॉट इक्वल टू, है ना, ये सीरीज कनेक्शन है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। सो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आपको अप्लाई करना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो पहले सी नॉट निकालोगे अगर तो 10 पिकोफैरेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया में कोई चेंज नहीं आया बट डिस्टेंस आपका हाफ हो गया, है ना, और इस केस में एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपका 5 हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस आपका हाफ हो गया। फिर इसके बाद सेम चीज यहाँ पे लिख लो, एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे d/2 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और 5 इंटू ए अपॉन d/2 आ गया। इससे अगर आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को पूरा कॉमन लेते हो तो एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके,
और 5 भी बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे में आपके पास 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बचेगा। तो यहाँ पे ये डी ऊपर चला गया तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11 समथिंग, 100 अपॉन 11 करीब करीब आएगा, 100 अपॉन 11, तो 9 मतलब 10 के आसपास ही आ जाना चाहिए आंसर हमारा। ठीक है, तो 10 के आसपास ही हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, रुको, है ना, प्रीवियस प्रीवियस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखो ये इस तरीके से एयर फील्ड है, ये एयर फील्ड है, तब जो कैपेसिटेंस बोल रहा है इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, और इसका एरिया अगर ए है, तो जो कैपेसिटेंस है इसको सी नॉट बोल रहा हूँ, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल, और इसकी वैल्यू को आपको 10 पिको फैराड दिया है। ठीक है, अब जब सिचुएशन ऐसी है कि आपने हाफ डिस्टेंस को डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है, एप्सिलॉन आर वन इक्वल टू 5 ले लिया, एप्सिलॉन आर टू इज इक्वल टू 1 ले लिया, बाकी को एयर ही रहने दिया। ठीक है, तो इस केस में एरिया आपका ए हो जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो डी है ही है। तो इस केस में आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन ए डी बाई टू। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर वन है 5, ए की वैल्यू आपका ए ही आएगा डी बाय 2। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, ये हो गया C1। अब इसी तरीके से अगर आप C2 निकालोगे तो एप्सिलॉन आर वन की जगह आर टू हो जाएगा ए डी बाई टू। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई, ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये हो गया आपका फिर से 10, तो 2 इंटू 10 आ गया, है ना, तो यहाँ पे 10 आ गया ये वाला। तो इसको लिख लेंगे 100 और इसको लिख लेंगे 20। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो 10 इंटू 20 अपॉन 120 आ रहा है ना, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, तो 10/6 के आसपास। तो ये तो 1 पॉइंट और गड़बड़ हो गया क्या, तो मेरे ख्याल से वही आना चाहिए, 10 के आसपास ही आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन का ही दिक्कत है, तो पिछले बार भी मेरे को वही लगा था कि कैलकुलेशन ही दिक्कत है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो 10 पिको फैराड है ही, दिया ही हुआ है पूरे डिस्टेंस के लिए, तो कुछ गलती तो नहीं दिख रही है। यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, हाफ किए तो पहले 10 था तो वो 20 हो गया, और ये तो सीरीज में है तो 10 इंटू, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये 100 है ना, 100 इंटू 20 एंड 100 120 ठीक लिखा था, 100 इंटू 20 तो ये 100/6 आएगा। एक यहाँ पे देख लो, C इक्विवेलेंट इज C1 C2, तो ये हो गया 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। तो यहाँ से हमारे पास ये जीरो कैंसिल हुआ, और ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ रहा है 40/6 यानी 20/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, कैलकुलेशन नहीं काम कर, 16.67, 16.67 आंसर है हमारे पास, ये 10 ही है। न्यूली फॉर्म कैपेसिटर, इसमें तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, आई थिंक इसको पैरेलल लेके सॉल्व किया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअली यहाँ पे हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मेरे ख्याल से इसको पैरेलल लेके उसने सॉल्व किया हुआ है, तो अगर मैं इसको पैरेलल लेके सॉल्व करूँ तो 120 आएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें ऑप्शंस पे कुछ मिस्टेक है, एक बार चेक करता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो तब तक मैं उसको चेक करता हूँ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स।
ठीक है, वाला क्वेश्चन एक बार चेक करता हूँ मैं तब तक। क्या क्वेश्चन था हमारा पास? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज a capacitance of। तो 80 आंसर में नहीं है ना, इसका ऑप्शंस गलत हैं यार। इसका आंसर ना गलत दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करो। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइप का क्वेश्चन आपने गेट के लिए भी किया होगा। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2.20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के लिए निकालना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको चार्ज दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको दो पॉइंट के बीच में निकालना है तो ये सिंपल क्या होता है, के क्यू एंड 1/RA - 1/RB, ऐसा लिख सकते हो आप। सो के हो गया 9 × 10⁻⁹ चार्ज हो गया 10⁻⁻⁹ 1/RA मतलब हो गया तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 100/20 कर लो और ये 100/10 कर लो। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया 9 और ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 10। सो ये आ जाएगा आपके पास -45 वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप इसके डायरेक्शन को मत देखो, मैग्नीट्यूड को निकालो, क्योंकि आप हो सकता है कि आप 10 से 20 जा रहे हो या 10 से 20 या 20 से 10 जो भी मूव कर रहे हो, अगेंस्ट द फील्ड जाओगे माइनस साइन आएगा, विद द फील्ड जाओगे प्लस साइन आएगा, इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या आएगा इसके मैग्नीट्यूड वाइज? 45। According to the Gauss law, the surface integral of the normal component of the electric flux density over a closed surface containing the free charge is, normal component is nothing but the rho s, and rho s is given by the charge per unit area. Okay, and you can say the surface integral of normal component, na? So it is equal to q upon epsilon naught. Okay, it is the electric field, so d dot ds is equal to charge enclosed। क्यों आएगा? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला होता, ये डी की जगह अगर ई बोला होता तो ऑप्शन बी आ जाता। ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ।
The law which states that the line integral of the magnetic field around a closed curve is equal to, so integration over the closed loop, that's a dot dl है ना, ये किसके इक्वल होता है, कर्ल ऑफ ए डॉट ds, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर्स लॉ। चलो ये बताओ। हेलो। Yes, guys. So I hope that you have answered this question. Okay, so the two conductor opposite direction is directly proportional to the square of current. So answer is option B. So guys, this is it from my side today, and thank you for watching this session. Okay, thank you for watching this session, and let's meet tomorrow with the new session. Means in the next class we will meet with another sessions, and don't forget to join this workshop. Okay, this workshop we are going to take is for the गेट 25 4 स्टूडेंट जो हैं जिनको 5 मंथ्स में अपनी तैयारी करनी है ना, उनके लिए। और स्कॉलरशिप टेस्ट आपका 90% स्कॉलरशिप टेस्ट आपको मिल सकता है। स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हो हर संडे को सुबह 9 से 9, ठीक है। And we will, if you can solve these questions also,
And don't forget to download the BYJU'S exam prep app. Let's meet tomorrow. Thank you.